Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
Today I am reminded of that evening, just after a few days of that horrific barbarian terrorist attack. Mumbai had collected right here in front of Gateway of India. We were furious, we were outraged, we were angry, but at the same time, we were together. We were united. We were connecting with each other. This is what Mumbai is. You know, we are known as the commercial capital of India. And I suppose commercial and commerce is not supposed to have a heart. But whenever any moment of such kind has come, whether a terrorist attack or a flood or any calamity, Mumbaikars have shown and Mumbai has shown that this city has her heart at the right place. Here is my humble tribute to this great city. I know there are certain emotions, certain feelings which cannot be captured in words. But whatever little, humble, incompetent effort I have made, I am presenting in front of you. Mumbai ko salam. सलाम उस शहर को हिंदुस्तान का है जो दरवाज़ा, सलाम उस शहर को जिसका हर एक अंदाज है ताज़ा, सलाम उस शहर को मेहनत की जिसके दिल में है इज्जत, सलाम उस शहर को कोशिश को देता है जो हर दौलत, सलाम उस शहर को जो हर इंसान से मोहब्बत है, सलाम उस शहर को गुमनामों को देता जो शोहरत है, सलाम उस शहर को जो कितने व्यापारों की नगरी है, सलाम उस शहर को जो कितने फनकारों की नगरी है, सलाम उस शहर को ख्वाबों का जिसको शहर कहते हैं, सलाम उस शहर को जिसमें बड़े दिल वाले रहते हैं, सलाम उस शहर को जिसमें सभी देशों की है बोली, सलाम उस शहर को जिसमें है क्रिसमस, ईद और होली, सलाम उस शहर को जो गणपति से प्यार करता है, जो नौरोज़ और बैसाखी सभी त्यौहार करता है, सलाम उस शहर को जिसमें बड़ी हर बात होती है, जहाँ होती है तो फिर टूट के बरसात होती है, सलाम उस शहर को हर पल जहाँ है कुछ न कुछ होता, सलाम उस शहर को जो एक पल को भी नहीं सोता, सलाम उस शहर को रंगीनियाँ जिस पर बरसती हैं, सलाम उस शहर को कि जिसमें इतनी परियां बसती हैं, सलाम उस शहर को जो अनगिनत लोगों का सपना है, सलाम उस शहर को हम जिसको कहते हैं कि अपना है, सलाम उस शहर को दुश्मन है रहते जिससे शर्मिंदा, सलाम उस शहर को जिसको शहीदों ने रखा जिंदा, सलाम उस शहर को कि जिसने करकरे को देखा था, सलाम उस शहर को कि जिसमें सालस्कर भी रहता था, सलाम उस शहर को अशोक कामटे जिसका वासी था, सलाम उस शहर को कि ओमले जिसका नवासी था, सलाम उस शहर को जिसे वीर यूं सम्मान देते हैं कि उसकी रक्षा के खातिर वो अपनी जान देते हैं, सलाम उस शहर को हिंदुस्तान का है जो दरवाज़ा, सलाम उस शहर को जिसका हर एक अंदाज है ताज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब।
अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसां उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम। प्रेम ही जिसका आंगन हो, मानवता जिसकी देही, बंधु भाव से ओत प्रोत सत्य हो जिसका प्रेहरी, युगों युगों से अटल है भारत बन के एकत्व का संगम। सारे विश्व को हमने माना वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम। देवियों सज्जनों नमस्कार। नमस्कार ये is a unique feature. We join our hands every time we do a namaskar. It's a symbol of oneness and the recognition that the divinity in me bows to the divinity in you. On this very day, ladies and gentlemen, at the same place last year, we pledged that we would never give shelter to terror, determined that this parasite called terrorism shall never breed in our homes. Today we want our dream to be realized, to reawaken to the power of love and of oneness. शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन मैं अपने संबोधन की शुरुआत पेंगुइन्स से करना चाहता हूँ। जी हाँ, पेंगुइन्स। एंटार्क्टिका में जहाँ सैकड़ों पेंगुइन्स अपने अंडे देने के लिए इकट्ठे होते हैं, उस वक्त वहां का तापमान शून्य से इतना नीचे चला जाता है कि जीवन का बच पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। सैकड़ों अंडों यानी पेंगुइन्स की लगभग एक पूरी पीढ़ी के समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में सारे पेंगुइन्स अपने अपने अंडों को बचाने के लिए एक साथ एक दूसरे से सट कर खड़े हो जाते हैं ताकि उनके शरीर की गर्मी उनके होने वाले बच्चों की रक्षा कर सके और इतनी भीषण ठंड में वो स्वयं भी बचे रह सके। जब अपनी भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सारे पेंगुइन्स एकजुट हो सकते हैं, फिर हम तो इंसान हैं, हम अपनी भावी पीढ़ी को एक भयमुक्त समाज देने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते? आज विध्वंस और विघ्न के संरक्षक हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन विध्वंस का मुकाबला उससे भी बड़ा विध्वंस करके नहीं किया जा सकता। प्रलय का सामना महाप्रलय से नहीं किया जा सकता है, इसका सामना किया जा सकता है एकजुटता से, वननेस से, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। विनाशकारियों का डर हमारे हथियार नहीं है, उनका डर हमारी ताकत भी नहीं है, उनका डर है हमारा एक हो जाना। उनके हमारे एक हो जाने में अपना विनाश नजर आता है, क्योंकि हम जब जब एक हुए हैं तब तब निर्माण प्रलय पर भारी पड़ा है। वो चाहते हैं कि हम टूटे रहें, बिखरे रहें, बटे रहें, कौम के नाम पर, भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। लेकिन ये याद रहे कि जब तक हम बटे रहेंगे वो डटे रहेंगे। एक फूस का तिनका जब गीला होता है तो हवा का झोंका उसे मीलों दूर उड़ा कर ले जाता है, लेकिन उसी फूस के तिनके को जोड़कर जब उसकी रस्सी बनाई जाती है तो वो मजबूत रस्सी एक विशाल प्रबल हाथी को भी बांध देती है। यह होती है एकता की ताकत। There is a sort of singularity, a kind of uniqueness about different things which cannot be called oneness. For example, if yogic meditation feels like waiting for something, then it is not meditation at all. Waiting in anticipation has at least two features. One which is waiting and the other which is waited for. Yogic meditation
is not divided. Such too is oneness. If oneness is seen as a cluster of differences which are united for a reason, then it will not perform. That is like a fist of different fingers. That's solidarity, not oneness. Oneness is the hand to which the fingers belong. It's the kind of singularity from which other singles, they spring out. The fist is a union of diversities. The hand is the oneness. Common joys, common suffering, common pride and common life. The common part presumes the diversity. Only that can be called common if it originally belongs to a diversity. Oneness is more than common. Oneness is our joy. Oneness is our pain. Oneness is our pride. Oneness is one life. Oneness is not a concept. It is a living reality. It is the essence of our existence. Ladies and gentlemen, there is a word which has its origin in the Bantu language of Africa. It's called Ubuntu. When translated, it means, I am because you are. It is an acknowledgement of the fact that we owe our selfhood to others, that we are bound together in ways we cannot possibly fathom, that there is an inherent unity to mankind, and we succeed by sharing with others. This is oneness. We are all part of a sacred web of life, connected through cause and effect. The English poet John Donne illuminates this point with almost surgical precision when he says, no man is an island entire of itself. Every cry of incapacitating hunger and unending poverty is our shame. Every shriek in hatred and discrimination is our defeat, ladies and gentlemen, because we are all fundamentally united at some level. We share one another's destiny. We are human together, or we are nothing at all. This profound truth, however, continues to elude us. The feeling of oneness is withheld from our experience because of our prejudices. All our existing problems are a byproduct of our prejudice. Prejudices of all kinds, religious, caste, gender, economic, they have been the main cause of division, hatred, and bloodshed. Look past these divisions and recognize that the soul in each body is the same basic nature. It is human. And therefore it is connected to other souls by this common attribute. Gandhiji explained this very beautifully. He said, I believe in the absolute oneness of God and therefore also of humanity. What though we have many bodies, we have but one soul. Our Upanishads tell us the fundamental maxim of Tat Tvam Asi, or how each individual is tied in with the larger truth. All religions need to get together to define what they have in common and work together for the benefit of humanity. Like every drop of water has the qualities of the water, every human has the attributes of a sea of humanity. This is one of the origins of oneness, and perhaps the best in its class. You know, ladies and gentlemen, a piece of ferrous metal can be melted and shaped in a foundry. Then it undergoes heat treatment to acquire whatever strength it needs to perform its functions. But no matter what shape, strength, or task it does, if you bring it in the presence of a magnet, it drops its task and shifts towards the magnet. The magnet works
on the basic nature of the metal, not the shape. Such also is the oneness of humanity. Oneness, ladies and gentlemen. एकात्मता, एकता, एकजुटता। ये विषय कोई नई बात नहीं है। उसके उदाहरण सदियों पहले से हमारे वेदों में, शास्त्रों में, कहानियों में भरे पड़े हैं। सर लुधियानवी साहब की लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। देवियों सज्जनों, एकजुटता कोई सामाजिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये तो एक संकल्प है, एक राष्ट्र निर्माण का संकल्प। एकात्मता एक राष्ट्र के होने का सबूत है। यदि कोई राष्ट्र एकजुट नहीं तो कहने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, वो राष्ट्र ही नहीं है। साथ आने का मतलब सिर्फ संग होना ही नहीं है, हमें संग नहीं संगठित होना है, हमें भीड़ नहीं समूह बनाना है, एक ऐसा जत्था जिसके चारों तरफ एकता की चार दीवारी हो। हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए एकता के उसी मजबूत किले का निर्माण करना है जहां विनाश और नफरत के विष बाण हम तक पहुंच न सके। हमारे बीच का यही अविश्वास विनाशकारी शक्तियों का समबल है। आज यदि हम दूसरे की चीख को इसलिए अनसुना कर देते हैं कि वो हमारे अपनों की चीख नहीं है, तो देवियों सज्जनों, वो दिन दूर नहीं कि किसी दिन कोई चीख हमारे अपनों की भी हो सकती है। अपनों की चीख से बचना है तो सीख लेनी होगी पेंगुइन से, फूस के तिनकों से, या फिर शायर के गीतों से। Ladies and gentlemen, terrorism is not just about holding the power to kill us. It is designed to destroy the integrity of our oneness. It is a desire to make children become slaves of their worldview of victimhood. It is a kind of collective selfishness which divides humanity into parts and portions for eventual consumption, which means that the oneness has no time to work on its main purpose, which is development and growth. There is reason in what His Holiness the Dalai Lama said. He said, every major religion of the world has similar ideals of love, the same goal of befitting humanity through spiritual practice, and the same effect of making their followers into better human beings. बाबूजी की कविता मधुशाला की ये पंक्ति याद आती है कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। Ladies and gentlemen, we have drawn lines, continents, and nations on this planet, but our planet is one. We have drafted scores of faiths and beliefs, but humankind is one. Humanity is one. Our oneness, our unity, our singularity is not limited to fighting terror and anti-social ideologies. Our singularity is too vast to be shaped by limited horizons. Our solidarity is too strong to be broken by cowards and parasites. We must define ourselves not by what we are against, but by what we are for, and what we can be for if we aren't for each other.
Author Damian Mark Smith says, "We are one. We've always been one. We'll always be one until we think we are not. Until we think we are not." Devi and Sachina. Namaskar. श्री अमिताभ बच्चन जी की हम हृदय से आभारी हैं। थैंक यू।